Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the video made by the legal concepts of CSS, PMS and law, and it's Dad here. Our main perspective is to provide you a quality-based information that would be beneficial in knowledge growth, and our subject is the history of USA. Today our topic is judicial review. So let's move on to what is judicial review. Judicial review is basically the power of judiciary to examine the law passed by the legislature. इसमें बेसिकली जुडिशरी ये चेक करती है कि जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने पास किया है वो आइन के मुताबिक है या नहीं, और इन केस अगर वो लॉ आइन के मुताबिक नहीं होता तो जुडिशरी उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वॉइड करार दे देती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन. It is by its power of judicial review the Supreme Court has always interpreted the Constitution to meet the needs of the time. Without the power of judicial review, the US federalism might have failed. It is also said that judges are under Constitution, but the Constitution is what judges say it. Supreme Court ने अपने judicial review की power use करते हुए बहुत मर्तबा ज़रूरत के मुताबिक Constitution में बहुत सी interpretation की हैं. और इन केस अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता तो यूएस की फेडरलिज्म फेल भी हो सकती थी. ये भी कहा जाता है कि जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है, पर कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो जजेस इसे कहते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशंस. द फर्स्ट वन इज द जुडिशियल री-एग्जामिनेशन एंड रिकंसिडरेशन ऑफ द लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ समथिंग एज द प्रोसीडिंग ऑफ अ लोअर कोर्ट और अ ट्राइब्यूनल और अ लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट और गवर्नमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. Next definition is according to the Max Lerner. Judicial review is presumably America's most beautiful and original gift to the art of government. Another definition is according to the Chief Justice John Marshall. The Supreme Court has the power to review the laws of the Congress and executive orders of the President as well as the law of the state. It thus protects the Constitution. It is a judicial veto on legislation. सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है कि वो कांग्रेस के बनाए हुए लॉज और प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रिव्यू कर सके. इस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से हिफाजत करती है. So from the above definition by John Marshall we got that कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ लेजिस्लेचर तक महदूद नहीं है, बल्कि ये फेडरल और स्टेट एग्जेक्टिव पर भी अप्लाई होती है. Moving forward, judicial review in US Constitution. The Constitution of US has not expressly granted the power of judicial review to the courts, but it seems to grant it indirectly in its provision. Constitutional basis for judicial review or doctrine of implied power. Though the Constitution is silent about the judicial review, yet it seems to grant it indirectly in its provision. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू की स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है. कहीं भी डायरेक्टली ये नहीं बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर किस तरह और किस पर अप्लाई होगी. स्टिल इट्स वर्किंग. जुडिशियल रिव्यू वहाँ पर अप्लाई किया जाता है और उसके मुताबिक फ़ैसले भी दिए जाते हैं. According to the Article 3 of Section 2, the judicial power shall extend to all cases in law and equity arising under the Constitution. According to the Article 6, the Constitution and the law of the US, which shall be made in pursuance thereof, shall be the supreme law of the land, and the judges in every state shall be bound thereby. अगर जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए किसी भी तरह का लॉ बनाया जाता है तो वो उस लैंड का सुप्रीम लॉ बन जाता है एक तरह से, और जितने भी जजेस वहाँ पर होते हैं वो उस पर अमल करने के लिए उसके बाउंड होते हैं.